Please start, sir. Thank you. So, a very good morning to all my dear students. I welcome you all in the last session of this revisionary series. In today's session, beta, we will cover a very yet another important topic, budget and budgetary control. Okay. So basically, different types of practical questions can be asked from this particular chapter, budget and budgetary control. The most common one being functional budget, like sales budget, production budget, raw material consumption budget. Apart from that, a very common practical topic that is supposed to ask in almost each and every examination is the fixed and flexible budget. How to prepare a flexible budget. So another important chapter in your syllabus, budget and budgetary control. Without wasting any time, we will directly jump to the point of discussion. I'm in page number 539. 539. So basically, budget can be bifurcated broadly into three parts. Okay. The first being on the basis of time. This is more or less theoretical, not relevant for the practical questions available in this particular chapter. While on the basis of function and on the basis of capacity, we are having n number of practical questions available in this book. What do you mean by on the basis of function? When every department in the organization prepare its own budget, then each those budget is known as the functional budget. I'm once again repeating, when each and every department of the organization prepare its own budget, then that budget is known as functional budget. For example, sales department will prepare the budget for its department known as sales budget. Production department will prepare the production budget. और कोई आप बता सकते हैं मुझे some more departments, common departments in each and every organization. The first one being the sales department, the second one being the production department. Can you name me few more departments? Yes, very good. HR department. HR department will prepare the labor budget. Finance department will prepare the cash budget. Okay, R&D department will prepare the R&D budget. So हर department जब अपने अपने लिए budget बनाता है, then each those budget are known as functional budget. Okay, when all the functional budget are combined together, then that concept is known as master budget. जब जितने भी functional budget है, sales budget, production budget, labor budget, raw material consumption budget, raw material purchase budget, when all these budget are combined together into a single budget, then that budget is known as master budget. वो अपन बोलते हैं ना master key, सभी तालों की एक ही चाबी, अब वही है ये master budget. तो जो आपने अलग अलग functional budget बनाया है, उन सब functional budget को जब हम ऐड कर देंगे तो ये हम बोलेंगे भैया ये हमारे लिए टोटलिटी में हो गया मास्टर बजट. ठीक है, चलो बेटा. तो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट एंड इन द लेटर हाफ of our lecture we will move to the preparation of when budget is prepared on the basis of capacity. Huh? There are two types of budget. The first one will be the fixed budget and the other one will be the flexible budget. Okay, sure. So please open page number 541. Page number 541. Illustration number 35. Page number 541. Illustration number 35. ठीक है बेटा, तो चलिए let's start. A very simple budget available in this particular section. The Barker company manufactured two models of adding machine. Okay. So the company name is the Barker company. They are manufacturing two products. The first product is product A and the second one being product B. The following production and sales data for the month of June 22 is given to you.
So estimated inventory have been given, that is the opening stock. Then you have been given the closing stock. You have been already been given the sales budget in units. Okay. And then unit sale price. You have been asked prepare a sales budget and a production budget for June 22. My question to you is you have to prepare the production budget. Okay. It's acceptable because production budget is not given in the question. My question is when sales is already given, why the question is asking us again the same point in the requirement part that we have to prepare a sales. Can you please tell me because this point? This point is very, very important. Production budget हमें दिया हुआ नहीं है. Okay, we will prepare that. But when sales is already given, then what kind of information the question is asking from the student to prepare a sales? I'm waiting for your answer, beta. Please communicate to me. Please communicate to me, beta. What's the purpose behind asking again the question sales? I'm waiting, beta. Now, please communicate. Jaldi batao, beta. Jaldi, fast. Why the question has again asked us to prepare a sales budget? My question is very simple. Already the sales is given to you. Then what new information the question is asking from us? Okay, let's see. Although the sales budget is given to you, but that budget is given in units. And in the requirement part, they have simply asked the sales budget. So definitely they have not asked the sales budget in quantity because that data is already given in the question. So thus, we are supposed to prepare a sales budget in rupee terms. What we have to do, we know that we will sell 7,500 units of product A. Each and every unit will fetch a rupee of 75. So 7,500 multiplied by 75. This amount the question is asking from a 5,62,500. Okay, sure. One my type on. Now, production budget. It's very simple. We have to produce the goods, product A and B, for two reasons. The first reason being we have to maintain the clothing stock. For thus, 4,000 units will be produced to maintain the clothing stock. Correct? Then we have to sell 7,500 units. So we have to produce 7,500 units. So can you please tell me how many units we have to produce? We have to produce 4,000 units to maintain the clothing stock at the month end. We have to produce 7,500 units so that we can sell to the customer. So our total requirement is 11,500 units. Now just check whether we are already having quantity of finished goods available in our stock. Yes. Out of 11,500, we are already having 4,500 units in the opening stock of finished goods. Thus, the remaining 7,000 units will have to be produced during the. So, बहुत simple calculation है बेटा. Closing stock आपने लिया, प्लस किया सेल, ये दोनों आ गया. इतनी क्वांटिटी की हमें रिक्वायरमेंट है ड्यूरिंग द पीरियड. Out of that requirement, we are already in stock 4,500 units. For the remaining 7,000 units, we will produce for product A. जल्दी से आप मुझे कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके बताइए how many units will be produced related to product B. How many units will be produced related to product B. Product B से related हमें कितनी यूनिट बनाना पड़ेगा?
Actually, my dear student, please reply for beta. In the last question I asked, no one has replied. In the classroom, there should always be two-way communication. I'm waiting. I will not deliver the answer unless and until my lovely students will communicate me what, according to them, will be the production unit for product B. It's very simple, beta. It's very simple. It's the bare minimum I'm expecting from my dear. Okay, so the answer will be for 2500 units we will require for closing stock, 5000 units we will require for sale. So total we require 7500 units. Out of 7500 units, 2250 unit is already in our stock. So we will produce 5250 units related to product B. Okay, चलिए बढ़ते अपन आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए. Similar question and nothing new about this question. So I don't think we should invest time in this batch for this particular question. Again, the same concept, closing stock plus sale. These are the quantity required during the period minus quantity available at the start of the period will be your production budget. Okay, sure. ये अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है बेटा. इट्स अ गुड क्वेश्चन. चलिए देखते हैं इसको. बढ़िया क्वेश्चन है. Question number 37. Budgeted production and production cost for the year ending 31st December are as follows. Okay. You have been given the product X, product Y. Total production will be 2,20,000 during the complete calendar year. Because here the year end of 31st December, it means they are following the calendar year. Calendar year means starting from January to December. Okay, this is related to product Y. Direct material, direct wages, total factory overhead is given to you. We can easily convert this factory overhead into per unit. 6,60,000 is for 2,20,000 units. So the variable overhead is rupee 3. Correct? Variable overhead is rupee 3. While for related to product Y, the variable overhead is rupee 4. Okay. Now, a company is manufacturing two products, X and Y. A forecast about the number of units to be sold in the first 7 months is given to you. Okay. Right from January to July, you have been given the data that how many units will be sold out. So already they have given out the sales budget in quantity. Okay. This is very important. It is anticipated that there will be no work in progress at the end of any month. So whatever have production have been started, that will be completed at the month end. There will be no WI. Finished unit equal to half the sale for the next month will be in stock at the end of each month, including December of previous year. वापस पढ़िए बेटा इस लाइन को. This line is very important. वापस पढ़िए इस लाइन को और समझने की कोशिश कीजिए कि what the question wants to communicate to you. How many students are comfortable in Hindi? Please communicate, beta, because the most important concept, not only I will deliver in English, but I will deliver in Hindi also. The most important concept. Okay.
So that will benefit more to you. How many students knows the Hindi? Will communicate not only in English but also in Hindi language. This means whenever you are making a plan for production in any of the month, current month sale, we have to produce 50% of the current month sale, and for the next month sale, we have to produce 50% before that particular month. What I want to say, if I am producing, suppose for March, okay, what will be my production plan? Current month, March की जो सेल है, इसका 50% मुझे मार्च में ही प्रोड्यूस करना है, और इन द मंथ ऑफ मार्च आई विल प्रोड्यूस 50% of April month sale. Similarly, for April, what will be the scenario? अप्रैल की जो भी सेल है उसका 50% हम अप्रैल में बनाएंगे. क्यों? Because already we have produced equivalent to 50% of April sale in the month of March. Already हमने 50% बना दिया. This is because whenever the month start on the very first day, it is not practically possible to produce the fresh unit and deliver to the customer. We have to keep some stock in hand because customer will not wait. जैसे ही हमारा customer कोई भी month की first तारीख को आएगा, हमें उसे उसी समय तुरंत डिलीवर करना होता है. अगर हमने उसको तुरंत गुड्स डिलीवर नहीं किया, then the customer will not purchase our goods because they want instant delivery. So what we have done कि कोई भी मंथ में जब भी हम प्रोडक्शन प्लान करेंगे तो वो दो चीजों के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा. पहला, उस मंथ की करंट सेल का 50% एंड नेक्स्ट मंथ की सेल का 50%. ओके, चलिए बेटा, तो मैं आपको एक काम करता हूं. I will provide you the production budget for say first few months, and then I will request you to solve the remaining part on your own production budget. If I prepare the production budget for product A, product X, what will be the scenario? January, February. Okay. Remaining month you have to try on your own. For January month, जो भी मेरी करंट मंथ की सेल है, करंट मंथ सेल्स का 50% मैं करंट मंथ में ही मैन्युफैक्चर करूंगा, और नेक्स्ट मंथ की सेल का 50% मुझे करंट मंथ में ही मैन्युफैक्चर करना है, so that whenever the new month start we are having sufficient stock so that we can deliver the customer at the same time whenever they demand the goods from us. Okay, so January sale is 10,000 multiply by 50%, while February sale is 12,000 multiply by 50%. So what will be the answer? The answer is we will produce 5,000 units in January for sale of January month, and we will produce 6,000 units in January for sale of February month. A total of 11,000 units will be manufactured in the month of January. Clear? चलो, इसी प्रकार से बेटा for the February month 12,000 into 50%, and we will manufacture some unit for the month of March in the February itself. So we are manufacturing 6,000 unit, we are manufacturing 8,000 unit, so total of 14,000 unit
will be manufactured in February related to product X. Now let's see बेटा ये कैसे वर्क कर रहा है. देखिए बहुत सिंपल है. फरवरी की अगर बात करेंगे, in the month of February we have to sell 12,000 unit. We have to sell 12,000 unit. Out of that 12,000 unit, we have already produced 6,000 unit in the month of January, and the remaining 6,000 unit it will be produced in the month of February. So total of 12,000 unit will be produced and sold in the month of February. ठीक है? अब एक काम करें बेटा. Now I am giving you some time. You have to provide me the answer for the month of March, April, May and June. चलिए, तो मैं आपको समय दे रहा हूं बेटा करीबन 3 to 4 minutes I am giving to you to solve this particular point on your own. What will be the production unit in the month of March, April, May and June? Okay, चलिए. Last 1 minute beta, please try to complete the production budget for the month of March, April, May and June related to product X. Okay.
देखिए बेटा, क्या किया होगा आपने, मार्च मंथ की सेल का 50% we will produce in the March itself, while in the March we will produce 50% of the sale of April month. 24,000 into 50%, and in the month of April, no, यहाँ पे 20,000 है बेटा, अप्रैल की सेल आपकी 20,000 है. Now 24,000 into 50%, 24,000 into 50%. What is the sale of June month? It's 24,000 multiplied by 50%. 24,000 multiplied by 50%. And the sale of July is 20,000 multiplied by 50%. Hope this concept is clear to each and every student, बेटा. चलिए बढ़े अब अपन आगे. चलिए almost similar question. Question number 40 में आइए. Almost similar question. Question number 40. Let's start this question. Long Beach Tools Corporation has the following direct labor requirement for the production of a machine tool set. They are manufacturing a tool set. So they have given us the labor requirement, which type of labor is required to manufacture a machine tool set. Okay. So the product will pass through two departments. The first department is known as the machining department, and output of machining department will be an input to the assembly department. And when assembly department wants on work on that particular product, then it will become the finished goods. So to manufacture a finished goods, the product has to pass through two processes. The first one is machining, the second one is assembly. How many hours are required in the machining department? 6 hours are required. Once the 6 hours are devoted to that particular product, the machining department will provide its output to the assembly department, and assembly department will work for 10 hours for that particular unit to manufacture a finished goods. What will be the labor rate? Here 10 rupee, here 8 rupee. Forecast sale we have been given of June, July, August and September, 6,000 units, 5,000, 8,000, 7,000. On June 1st, beginning inventory, what is the tool set? Tool set is nothing but the finished goods. They have been given that we are having 1,500 units at the start of the June month. Closing inventory divide each month is 1/2 of the forecasted sale for the following month. कितना आपके पास क्लोजिंग स्टॉक रहना चाहिए नेक्स्ट मंथ की सेल का 50%. You have to maintain the closing stock in the previous month. First of all, they have asked us to prepare a production budget for the month of June, July and August. तो देखिए मेरे बच्चों, it's very simple. मैं जून की बात करता हूं, then I will give you time to solve for July and August month. Okay. Production for sales. सेल करने के लिए हमें जून में कितना प्रोड्यूस करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क द क्वेश्चन दैट हाउ मेनी यूनिट you will sold in the June month. The answer is, sir, we will sold 6,000 unit in June month. Okay. Out of this 6,000 unit, ask yourself whether you're already having stock at the beginning of June. Yes, sir. We are already having stock of 1,500 unit. So in the June month, we will produce 4,500 unit. But
Question is said that you have to maintain the closing stock. And what will be the formula of closing stock? One half of the forecasted sale of the following month. अगले महीने में जितनी सेल होने वाली है उसका 50% हमें प्रीवियस मंथ में प्रोड्यूस करके रखना है. तो what will be the formula for this? The formula will be next month sale multiply by 50%. So tell me the amount बेटा. नेक्स्ट मंथ सेल आपकी जुलाई की 5000 यूनिट है. 5000 का 50% जब आप करेंगे यू विल गेट 2500 यूनिट. 5000 multiplied by 50%. So how many unit will be produced in the month of June? A total of 7000 unit will be produced in the month of June. क्लियर है बेटा? चलो, तो अब आप एक काम कीजिए. अगेन आई एम गिविंग यू 3 to 4 मिनट टू सॉल्व फॉर जुलाई एंड अगस्त. देन वी विल प्रोसीड हाउ टू प्रिपेयर डायरेक्ट लेबर बजट that has been asked in requirement part number 2. Okay, चलिए. Okay, beta. Tell me the answer. What will be the answer? The answer will be 6500 unit and 7500 unit. Clear है बेटा? चलो. तो अब देखो बहुत सिंपल है. Now we know that our labor will pass on through two department. Department assembly and department eco department है ना, assembly और आपका machining department. So it's very simple. We want to produce 7000 units in the month of June, okay? And for every unit, we require 6 labor hour of machining department. So every unit, 6 labor hour required, and we want to produce 7000 units. So thus 42,000
labor hours of machining department will be required in the month of June. And for every labor, we have to incur rupee 10. So 4,20,000 is the direct labor budget for the month of June related to machining department. And what about the assembly department? Assembly department will require 10 hours to manufacture a unit, multiply by a total of 7,000 unit will be manufactured. So 70,000 labor hours of assembly department will be required, and for every hour rupee 8 will be incurred. So my labor cost budget will be 5,60,000 related to the assembly department. Clear beta? Chal बढ़ते आगे. It's very simple, nothing to discuss about this question. Okay, now we will discuss about the fixed budget and the flexible budget. So this line is very important, my dear friend. Please listen very carefully. What's the difference between fixed and flexible budget? When the budget is prepared for only one level of output, when the budget is prepared for only one level of output, that is known as fixed budget. Irrespective of the actual number of units sold, the fixed budget will not alter. Anna, please write down, give the heading in your copy, beta. Fixed and flexible budget. Please give the heading in your copy, fixed and flexible budget. Please write down. Fixed budget. A budget which is prepared, a budget which is prepared for a single volume level, a budget which is prepared for a single volume level is known as fixed budget. Write down next point, flexible budget. Flexible budget. There are two definitions related to flexible budget. Start of the year, budget will be prepared for two or more levels of output. जब दो या दो से ज्यादा लेवल पर बजट बनाया जाता है, then that is known as flexible budget. Now this is something very important. End of the year, very important. For comparison purpose, for comparison purpose,
We will prepare a budget based on actual output. तो जब एक्चुअल आउटपुट के आधार पे ही बजट बनाया जाता है, then that budget is known as the flexible budget. Okay, चल write down one more point, स्पेशल पॉइंट लिख दो ऐसा, स्पेशल पॉइंट या इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी आपको हेडिंग देना हो. Before preparing a flexible budget, before preparing a flexible budget, comma, the cost must be bifurcated. The cost must be bifurcated into three parts. Before preparing a flexible budget, cost must be bifurcated into three parts. One by one लिखते जाइए अब आप. Fixed budget, flexible budget, and fixed cost, not fixed budget, fixed cost, variable cost, and semi variable cost. ये कॉस्ट का बाइफरकेशन किए बिना बेटा आप आगे बढ़ ही नहीं सकते फ्लेक्सिबल बजट में. जब भी आपको फ्लेक्सिबल बजट बनाना है, यू मस्ट बाइफरकेट द कॉस्ट इनटू थ्री पार्ट्स: फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, चलिए आइए अब क्वेश्चन में देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन बनते हैं इससे रिलेटेड. क्वेश्चन नंबर 45. क्वेश्चन नंबर 45. The monthly budget for manufacturing overhead of a concern for two level of activity. एक्टिविटी का मतलब होता है वॉल्यूम. एक्टिविटी का मतलब होता है बेटा वॉल्यूम. हमें दो वॉल्यूम पर खर्चे दिया हुआ है. क्या क्या वॉल्यूम है भैया? पहला वॉल्यूम है 60%, नेक्स्ट वॉल्यूम है 100%. ओके, सो वी हैव बीन गिवन द प्रोडक्शन 600 यूनिट, 1000 यूनिट. So, first requirement part is we have to identify which one is variable cost, which one is fixed cost, and which one is semi-variable cost. How many students is well aware of these three costs? Tell me, beta. If you are having any doubt in the bifurcation, then I will guide you. Otherwise, we can directly proceed with the question. How many students are not aware how to identify the cost as variable or fixed or semi variable? वेरिएबल, फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? इफ यू आर अनकंफर्टेबल और नॉट कॉन्फिडेंट in this particular point, please communicate to me, beta. I will explain this one. In the absence of any comment from your side, I can assume that you are well aware of the bifurcation technique of variable, fixed and semi variable. जल्दी जल्दी मुझे कम्युनिकेट करें.
I am very much surprised, beta. No one is replying. It's almost beta 45 minutes. I have asked multiple questions from you, but no student is replying. How it's possible? Okay. So I'm assuming, beta, that you are well aware of the bifurcation technique. So when you look at the wages, it will be a variable cost because the cost changes and the cost changes in the direct proportion. Okay. So it will be a variable cost. Consumable store, we will check out whether this is a variable cost or semi-variable cost. It is also a variable cost. Regarding the maintenance, I think it will be a semi-variable cost. Yes, it's a semi-variable cost because the total cost is changing, but it will not change in the direct proportion. The next cost is also the semi-variable cost, and the remaining two costs are same whether we are producing at 60% level or 100% level. Depreciation and insurance amount are same at both the level. Okay. Now some basic point. Whenever you identified the cost as a variable cost, you have to find out that cost on per unit basis. तो हमें सबसे पहले जो भी कॉस्ट को हमने आइडेंटिफाई किया एज अ वेरिएबल कॉस्ट, we must convert that variable cost on per unit basis before making any final calculation. Fixed cost को हमें total में convert करना होता है and total has already been given to us. And now it's very important, since the semi variable cost consists of variable portion as well as fixed portion, this semi variable cost will be bifurcated into two parts. The first being variable cost per unit and the second being fixed cost total. ऐसा ही हमें अगली सेमी वेरिएबल कॉस्ट के लिए भी करना है, सेम पॉइंट। ठीक है बेटा, तो चलिए मैं आपको समय देता हूं बेटा। आप मुझे रॉ डेटा निकाल के बताइए कि जो मेरा पहला खर्चा है, we have identified it as a variable cost. So what is the variable cost per unit? Regarding the point number third, maintenance and power and fuel are the semi-variable cost. So you have to bifurcate that semi-variable cost into variable portion and fixed portion. And regarding depreciation and insurance, it's very simple because they are denominated in total and the total has been given to us. Okay, चलिए।
ओके बेटा, चलिए लेट्स स्टार्ट. सो द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल बी 1200 divided by 600 unit. So it will be rupee 2 per unit. Okay. And here it will be 1.5 rupee per unit. ठीक है. अब हमें वेरिएबल कॉस्ट निकालना है सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से. सो द टोटल एट 1000 यूनिट इज 1500 while the total at 600 unit is 1100. So 400 cost has been increased by increasing the volume of 400 unit. 400 रुपए का हमारा खर्चा बढ़ता है 400 यूनिट के बढ़ने से. इस मीन्स अवर वेरिएबल कॉस्ट इज रुपी 1, है ना. तो अब हम फिक्स कॉस्ट बहुत आसानी से निकाल लेंगे. तो आपकी फिक्स कॉस्ट आई होगी बेटा 500 रुपी. आई ऑलरेडी कम्युनिकेटेड टू यू. नो वन हैज रिप्लाइड, सो आई डीम दैट दिस कैलकुलेशन हैव बीन क्लियर इन योर माइंड. जस्ट वी आर प्रैक्टिसिंग द सेम. यहाँ पे भी जब आप देखेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट आपकी 1 रुपी आ रही होगी और फिक्स कॉस्ट आपकी यहाँ पे 1000 रुपी आएगी और ये टोटल आपका 4000 आएगा और ये आपका टोटल 1000 आएगा. Whenever you have to prepare a flexible budget without bifurcating the cost between among variable, semi-variable and fixed, you will not be able to solve a question of flexible budget. So always remember in mind. Now we have to prepare a budget at 80% capacity. 80% means 800 units per. अब हमें एक बजट बनाना है. ओके, तो देखिए बच्चों बड़ा ही सिंपल है. 800 यूनिट्स पर अब हमें बजट बनाना है. तो हमें पता है जो हमारी वेजेस है, it will be a variable cost. So the amount will be 800 into 2 rupee. This will be the amount of wages. Regarding the consumable, 800 units multiplied by rupee 1.5. ठीक है. Regarding the semi variable cost, it will be 800 into 1 plus the fixed cost will remain same, that is rupee 500 rupee. Next, power and fuel, 800 into 1 plus 1000 rupee, and depreciation and insurance will remain same irrespective of the level of volume. So this will be known as a flexible budget. But this will be prepared once you are identified the cost as variable, fixed and semi-variable. Clear है बेटा? चलो. तो देखिए यही यही मैं आपको समझा रहा था. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वंस यू आर आइडेंटिफाइड द कॉस्ट यू मस्ट कन्वर्ट इट इन बेसिक डिनोमिनेशन. देन ओनली यू विल बी एबल टू प्रोसीड फर्दर. ठीक है, चलिए बढ़ते अब आगे. चलिए बेटा, मैं आपको पूरे 5 मिनट दे रहा हूं सो दैट यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन. 5 मिनट्स फॉर सेल्फ प्रैक्टिस. एक बार आप इस क्वेश्चन को अपने लेवल पे ट्राई करें. क्वेश्चन नंबर 46 छोटा सा है लेकिन कैलकुलेशन अच्छे है. इसमें आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा, स्पेशली द लास्ट पैरा. देन ओनली यू विल बी एबल टू प्रोवाइड मी द करेक्ट आंसर. ओके, सो आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑन योर ओन.
Last 2 minutes, beta, to do this question on your own. Question number 46. Okay, last 2 minutes are available with you. Okay, dear students, let's start discussing this particular question. So what the question is saying? Question is saying that a factory is engaged in manufacturing plastic toy and is right now working at only 40% of the capacity, and they are producing 10,000 toys per month. So this is very important. Whether 10,000 is 100% capacity or it is equivalent to 40% capacity. Can you tell me beta? ये जो 10,000 है, ये 40% कैपेसिटी के बराबर है या ये 100%? अनडाउटेडली यहाँ पे लिखा है 40 एंड प्रोड्यूसेस, आज बना रहे हैं. It means this is equivalent to 40% of the capacity. So our maximum capacity at 100% will be 25,000. Any doubt, beta, in this particular point? Please communicate to me. Any doubt in this particular point to anyone? बढ़े आगे, चलो देखो. मटेरियल हमें दिया हुआ है, लेबर हमें दिया हुआ है, ओवरहेड हमें दिया हुआ है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट to bifurcate the overhead into variable overhead and fixed overhead. So the variable overhead per unit is 2 rupee, 5 का 40%, and the fixed cost in totality will be rupee 3 multiplied by 10,000 is equal to 30,000 rupee will be our fixed cost total. क्लियर है आपको ये? चलो, सेलिंग प्राइस हमारा दिया है 20 पर टॉय. ठीक है, अगर हम 50% कैपेसिटी, चलो पहले इसको लिख लेते हैं, इस टाइप से लिख लेते हैं, देन इट विल बी इजी फॉर अस. सो इट इज 40%, 50% एंड 90%. ठीक है, यूनिट्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 10,000 यूनिट है, यहाँ पे 12,500 यूनिट है, और यहाँ पर 22,500 यूनिट है. ठीक है, रिगार्डिंग द सेल प्राइस 20 रुपी. अब अगर हम 50% कैपेसिटी पर वर्क करेंगे तो हमारी सेल प्राइस 3% से कम हो जाएगी, मतलब ये हो जाएगा 19.4. और अगर हम 90% कैपेसिटी पर वर्क करते हैं देन द सेल प्राइस will decrease by 5%, that is it will be 19 rupee.
accompanied by a similar fall in the price of material. This is very important. रॉ मटेरियल यहाँ पे 10 रुपए का है, जितने परसेंट से सेल प्राइस हमारी रिड्यूस हो रही है, मटेरियल भी उतने परसेंट से ही रिड्यूस होगा. सो 10 का अगर आप 3% कम करेंगे तो 9.7 और इधर आ जाएगा मेरे बच्चों 9.5. अदर कॉस्ट अनलेस अदरवाइज स्टेटेड will remain same. Variable overhead, it will remain same. Fixed cost total, it will remain same, 30,000. There will be no change. ये मैं आपसे bare minimum expect कर रहा था in those 5 minutes because without this calculation you will not be able to solve the question. तो देखिए बेटा 20, 19.4 और ये 19. अब ये कैसे आया 1,21,250? It's very simple. 12,500 unit multiplied by 9.7 is equal to 1,21,250. While the other three costs, labor cost, variable overhead, and your fixed overhead will remain same unless otherwise stated. Clear है? चलो बेटा बढ़ते अपन आगे अब. चलिए सिमिलर क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 51. अगेन आई एम गिविंग यू 5 minutes to solve this question on your own. Okay? चलो बेटा करिए सॉल्व इसको आप.
चलिए बेटा ना लास्ट 2 minutes are available with you. चलिए बेटा, let's start the question. So first of all, you have to bifurcate the cost into variable, fixed and semi-variable, and those costs will be denominated in their respective denomination. Direct material, direct labor, and variable overhead, since they are variable costs, they are already on per unit denomination. Fixed overhead, we require in totality 1,20,000. It's again a variable cost on per unit basis. Take care. Regarding the selling expense, we have to bifurcate the selling expense into two parts. The variable cost per unit will be 10.8 rupee because 10% is fixed. It means 90% is variable. So the fixed cost total will be 1.2 multiplied by 10,000, it will be 12,000 rupee of fixed selling overhead. Clear hai? Next point, admin overhead, it is completely fixed, 40,000, 20% fixed, it means 80% variable. So it will be 3.2 and the total will be zero point 0.8 multiply by 10,000, it will be 8,000 रुपये. तो देखिए बेटा, सबसे पहले आपको यही कैलकुलेशन करना पड़ेगा. जैसे यहाँ पे हमारे पास फिक्स कॉस्ट है, तो हमने फिक्स कॉस्ट को टोटल में कन्वर्ट कर दिया. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना. जो वेरिएबल कॉस्ट था हमने उसको पर यूनिट में कन्वर्ट कर दिया. बाकी ऊपर वाली चारों चीजें तो आपको दिए होता. तो वो वेरी सिंपल टॉपिक, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट. Only and only issue is you have to deal with the identification of variable cost, fixed cost, and the semi-variable cost. Once it has been identified, then whatever level of output the question require us,
to prepare a budget, we can easily formulate the budget on that particular limb. Okay, any doubt beta in this particular question? Can we proceed further? Okay, चलिए ये सिंपल है, इसमें अपन अपना समय नहीं देंगे. सेल्स बजट दिया है, हमें मशीन आवर दिया. आई डोंट थिंक दिस इज अ क्वेश्चन दैट वी विल डू इन दिस पर्टिकुलर सेशन. Okay, we will start from new topic beta. Because almost all of the varieties we have already covered here. Okay, okay. One more important topic is sales budget, है ना? Sales budget का cash budget बाकी है, तो cash budget अपन कर लेते हैं बेटा. That is also important topic. चलिए, cash budget. फिर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा. Before starting this question, I want to give you minimum 7 minutes so that you can solve this question on your own regarding the how much revenue we will generate regarding the sale in each and every month. They were very super question regarding the cash budget. Okay, so I'm giving you minimum 7 minutes of time for your self practice, and then we will require 10 to 15 minutes after that your 7 minutes. So बहुत अच्छे से हमें इस क्वेश्चन को करना है बेटा. एक क्वेश्चन अगर हमने कंप्लीट कर लिया तो पूरा क्वेश्चन हमारे कैश बजट के बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं. आई एम गिविंग यू 7 minutes फॉर सेल्फ प्रैक्टिस ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 50.
Last 2 minutes, beta. I'm expecting that you will provide me the collection from debtors and the cash sales amount of April, May, and June. This is the most important calculation in the cash budget. Chali beta. So let's start the most important point of cash budget. Other points are very simple. So first of all, we are deciding the sales budget. है ना? सबसे पहले हम ये पता लगाना चाहेंगे कि सेल्स से हम किस किस मंथ में कितना कितना अमाउंट कलेक्ट कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले यू शुड हैव अ क्लैरिटी दैट वी आर प्रिपेयरिंग बजट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, मई एंड जून। सो हमें यह चेक करना है कि we have been given the data from February to June. So whether the February sale collection are to be received in the month of April or not. तो चेक करो बेटा। सबसे पहले जो भी फरवरी की सेल हुई है उसका बोला है 10% कैश में है और बचा हुआ 90% क्रेडिट में है। जो 90% क्रेडिट है, 90% का 50% बोले तो टोटल सेल का 45% हमें मार्च में कलेक्ट होगा और बैलेंस बैलेंस बोले तो बचा हुआ 45% हमें अप्रैल में कलेक्ट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो 50% आप ले रहे हो, दिस 50% विल बी ऑफ क्रेडिट सेल, नॉट द टोटल सेल। तो मेरी क्रेडिट सेल 90% थी, तो 90% का 55%, 45% विल बी रिसीव्ड इन मार्च एंड अप्रैल। लेकिन मेरे लिए ना तो ये वाला डेटा कोई काम का है, ना ये वाला डेटा कोई काम का है। मेरे लिए सिर्फ डेटा काम का है अप्रैल, मई और जून। तो फरवरी में मेरी टोटल सेल हुई है 14,000। सो 14,000 का 45% विल बी रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल, दैट इज 6,300। क्लियर है बेटा? इसी प्रकार से अब मार्च का इस प्रकार से अपन स्टेटमेंट बनाएंगे कि मार्च की सेल भी दो पार्ट में बाइफरकेट होगी, कैश एंड क्रेडिट। तो मार्च में जो हमने क्रेडिट सेल किया था उसका 45% पैसा हमें मिलेगा अप्रैल में और बचा हुआ 45% पैसा हमें मिलेगा मई में। तो मार्च की सेल अगर आप देखेंगे तो ये 15,000 है। 15,000 का 45%, 15,000 का 45%, दिस विल बी 6,750। फिर ऐसा ही अब हमें
अप्रैल मंथ के लिए करना है। अप्रैल में भी दो पार्ट, कैश एंड क्रेडिट। कैश फेल है 10%, तो 16,000 का 10% अगर हम करेंगे तो इट विल बी 1600, और फिर इसका बचा हुआ 45% का पेमेंट मई में मिलेगा, और फिर बचा हुआ 45% का पेमेंट जून में मिलेगा। तो कैलकुलेशन अगर हम करें तो कितना कितना पेमेंट आ रहा है बेटा? ये आ रहा है 6750, 16,000 का 45%, it is equivalent to 7200 unit that will be received in May and June. तो अगर मुझे निकालना है अप्रैल मंथ में सेल से रिलेटेड मैं कितना अमाउंट कलेक्ट कर पाया, तो दिस इज द फर्स्ट अमाउंट, दिस इज द सेकेंड अमाउंट एंड दिस इज द थर्ड अमाउंट। सो जब आप तीनों का टोटल लगाएंगे तो इट विल बी 6300 प्लस 6750 प्लस 1600, द टोटल विल बी 14,650 will be received regarding the sale। ये आ गया अमाउंट आपका 14,650। दिस इज द अमाउंट 14,650। क्लियर है पॉइंट ये आपको? चलो, अब हमें क्या बोला है बेटा, इसी प्रकार से हम अप्रैल का अमाउंट निकाल लेंगे। इसी प्रकार से हम अप्रैल का निकाल लिए, इसी प्रकार से हम मई का अमाउंट निकाल सकते हैं, है ना। चलो, अब हमें वेजेस के बारे में क्या, क्रेडिटर तो बहुत सिंपल है। क्रेडिटर के बारे में हमें बोला है पेमेंट 2 महीने बाद मिलेगा। मतलब जो हमने फरवरी में परचेस किया था उसका पेमेंट हमें 2 महीने बाद करना है, मतलब फरवरी की परचेस का पेमेंट हमें अप्रैल में करना है। तो देखिए आप, हमने 9600 रुपी अपने क्रेडिटर को पेमेंट किया है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। क्लियर है? रिगार्डिंग द मटेरियल, ये आपको ध्यान रखना है बेटा, 1/4 इन द नेक्स्ट मंथ, मतलब 25%, मतलब 75% उस मंथ की वेजेस उसी मंथ में मिल जाती है, और बची हुई 25% वेजेस नेक्स्ट मंथ में हम पेड ऑफ करते हैं। तो चेक कीजिए, मुझे बजट बनाना है अप्रैल से लेकर जून तक। मार्च की जो वेजेस थी वो है 3000, तो 3000 का 75% तो मार्च में ही दिया जा चुका है। तो बचा हुआ 3000 का 25%, दैट इज 750 रुपी, हमें कब पे करना पड़ेगा? वी हैव टू पे देम इन द मंथ ऑफ अप्रैल। प्लस प्लस अप्रैल मंथ का 3200 का 75%, तो 3200 का 75% करे कितना आ रहा है? ये हमें अप्रैल का अप्रैल में ही पेमेंट करना पड़ेगा 2400, फॉर द टोटल पेमेंट ऑफ वेजेस विल बी 3150। ओके, क्लियर है? तो चेक कर लीजिए बेटा इसको भी, वेजेस का पेमेंट आपका जा रहा है 3150। तो जल्दी से बताइए बेटा, कितने बच्चों ने, जब मैंने आपको समय दिया था, तो हु हैव डन द करेक्ट कैलकुलेशन ऑफ सेल्स रिगार्डिंग द वेजेस, रिगार्डिंग द ओवरहेड, रिगार्डिंग द क्रेडिटर? जल्दी से मुझे बताइए कितने बच्चों से अपने लेवल पे ये वाले पॉइंट बिल्कुल सही हुए हैं। आई एम वेटिंग बेटा। है ना, जब तक मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं तो इसकी बहुत अच्छे से फिर अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर अपने को कोई इश्यू नहीं आएगा if the paper setter asks the same in your examination। चलो, सभी का आ गया था, चलो वेरी गुड बेटा। अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 43 में, अगेन इट फॉर सेल्स बजट। तो फिर से मैं आपको समय देता हूं बेटा, बिकॉज द बेसिक पर्पस behind this, that whenever I give the time to student, that unless and until you practice the question on your own, you will not gain the confidence. So it's very important that before I help you in a particular point, you must try that particular question on your own, then only the learning process will start बेटा, है ना। नहीं तो वो एक प्रकार से स्पून फीडिंग हो जाती है कि फैकल्टी ने सब कुछ करा दिया। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट स्टूडेंट मस्ट लर्न फ्रॉम themselves, and then whenever they have committed the mistake, the same should be rectified by the teacher, है ना। चलिए, तो अगेन बेटा मैं आपको समय दे रहा हूं,
7 to 8 minutes का for fell practice.
Actually, beta, last 2 minutes available with you. I want the answer regarding the sales, material, and wages. Okay. You have been prepared a cash budget for the 6 months, so I'm expecting that you must do the correct calculation regarding the sales, material, and wages. Okay, beta, shall I start now? चलो तो देखो बच्चों. First of all, we have to prepare a cash budget for the first 6 months. It means from January to June. Okay. कैश बैलेंस हमें दिया हुआ है 1 जनवरी का 10,000. एक न्यू मशीनरी हमने 20,000 क्रेडिट पे लिया है जो हमें 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में रीपे करना है in the month of March and April. So 10,000 rupee we will pay to the creditor for machinery in the month of March and April. Sales commission at the rate 5% on total sale, including the cash, including the credit, to be paid within a month following actual sale. मतलब जनवरी मंथ में जितना भी सेल कमीशन एक्रू हुआ है, we will pay that commission in the month of February. February month में जो भी सेल हुई है, उसका 5% we will pay in the month of March. 10,000 being the amount of second call may be received in March. Simple calculation है, कोई calculation ही नहीं है. दिया हुआ शेयर प्रीमियम भी हमें 2000 मिलेगी सेकंड कॉल के साथ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर. So whatever material I am purchasing,
आई हैव टू पे आफ्टर 2 मंथ, 2 मंथ्स का मुझे क्रेडिट मिला है, मतलब जनवरी मंथ की परचेज का पेमेंट मुझे मार्च में करना है, फेब्रुवरी मंथ की परचेज का पेमेंट मुझे अप्रैल में करना है। सिमिलरली पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर 1 मंथ, जनवरी की सेल का जो भी हमारा क्रेडिट सेल है उसका हमें पेमेंट मिल जाएगा फेब्रुवरी में। डिले इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड 1 मंथ, डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस 1/2 मंथ, अज्यूम कैश सेल्स टू बी 50% ऑफ टोटल सेल, मतलब जो भी हमारी सेल हुई है उसका 50% कैश है, 50% क्रेडिट है। तो देखो मेरे बच्चों, सबसे पहले मैं अगर जनवरी की बात करूं तो जनवरी की सेल का, और चूंकि ये न्यूली स्टार्टेड कंपनी है इसलिए हमें कोई भी प्रीवियस मंथ की डिटेल नहीं दिया है, तो ये हमारा फर्स्ट मंथ ही है। तो सबसे पहले हम कैश सेल्स की बात कर ले, यहाँ पे आएगा 10,000, यहाँ पे आएगा 11,000। क्रेडिट सेल का कोई भी पैसा हमें नहीं मिलेगा, लेकिन उसने बोला हम 1 महीने का क्रेडिट अलाउ करते हैं, मतलब जनवरी मंथ का 10,000 बचा हुआ, टोटल हमारी 20,000 की सेल थी, तो जनवरी मंथ का जो 10,000 जो क्रेडिट सेल है दैट वी विल कलेक्ट इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, तो फेब्रुवरी में हमें 10,000 मिल जाएगा। इस प्रकार से आप देखेंगे तो 10,000 और ये 21,000 का पेमेंट आएगा। अगर मैं इनिशियल 2 महीनों की बात करूं तो ये आ रहा है पेमेंट आपका। बड़े आगे चलो, रिगार्डिंग द मटेरियल, हमारे को जो हमने जनवरी में परचेस किया है उसके लिए हमें 2 महीने का क्रेडिट मिला है, सो दिस 20,000 विल बी पेड ऑफ इन द मंथ ऑफ मार्च, दिस 14,000 ऑफ फेब्रुवरी विल बी पेड अप इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो चेक कर लेते हैं भैया पेमेंट, यहाँ पे कोई पेमेंट नहीं जा रहा है, यहाँ पे 20,000 और 14,000 का पेमेंट जा रहा है। ठीक है, वेजेस की अगर हम बात करेंगे बेटा, तो वेजेस के लिए हमें बोला है डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस हाफ मंथ, कहने का मतलब हाफ मंथ का मतलब होता है 4,000 का 50%, तो इसी मंथ में पेमेंट कर देंगे, मतलब 2,000, और बचा हुआ 2,000 का पेमेंट मुझे अगले महीने करना पड़ेगा। फेब्रुवरी मंथ की जो वेजेस है 4,400, इसका 50% पेमेंट हम इसी मंथ में कर देंगे, बचा हुआ पेमेंट हम अगले मंथ में करेंगे। सो वेजेस का अगर आप चेक करेंगे तो इधर 2,000 आ रहा है और इधर आ रहा है बेटा ये 4,200, तो ये अमाउंट आ गया आपका वेजेस का 2,000 और 4,200। तो लिटरली वेरी सिंपल बेटा, जब भी कैश बजट आए आप मान के चलिएगा ये आपके लिए बहुत बहुत सिंपल जाने वाला है। चलो, अब एक छोटे से क्वेश्चन के साथ we will end this revision session series. So let's start question number 42. ये simple question है बेटा, that's why I will give you only 5 minutes to solve this particular question on your own, है ना। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, बहुत जल्दी आपसे हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 42 आप सॉल्व करें। In case you are having any doubt in question number 43 beta, you can ask me, I will clear that doubt.
ओके बेटा, चलिए लेट्स स्टार्ट। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे क्रेडिट सेल के बारे में हमें क्या बोला है? अप्रैल मंथ की सेल अगर 45,000 है, अप्रैल की 45,000 है, ठीक है, तो 45,000 का 70% हमें अप्रैल में ही मिल जाएगा। ओके, 20% हमें मई में मिलेगा, 8% हमें जून में मिलेगा, और बचा हुआ 2% हमारा अनकलेक्टेबल रहता है, बैड डेप्ट रहता है। अब व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेप्ट इन द कैश बजट? देयर इज नो ट्रीटमेंट, बिकॉज कैश बजट मींस व्हाट अमाउंट विल यू रिसीव इन द फ्यूचर and what amount you will spend in the future. There is no such concept as bad debt in the cash budget. Always remember, whenever you are having any doubt in the preparation of the cash budget, always think of the bank account. Whether the bad debt will appear in the bank account, the answer is no. So that transaction will not appear in my cash budget. Clear है? तो चलिए बेटा, फिर अकाउंट रिसीवेबल हमारे सेकेंड क्वार्टर में कितना कितना था ये दे रहा है 18,000, ऑफ विच अनकलेक्टेड फेब्रुअरी सेल और मार्च सेल का इतना इतना है ना? तो इससे आप बहुत आसानी से टोटल सेल निकाल सकते हो बेटा, फेब्रुअरी और मार्च की बहुत आसानी से निकाली जा सकती है, क्योंकि आपको पता है ये जो भी अनकलेक्टेड सेल है विच रिप्रेजेंट अनकलेक्टेड फेब्रुअरी सेल, तो बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं, ये 2% के इक्विवेलेंट है। तो टोटल सेल फेब्रुअरी की हमारी कितने परसेंट के इक्विवेलेंट रही होगी, है ना? सो वी हैव सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चन ऑफ कैश बजट बेटा। होप दिस ऑल द 5 सेशन conducted by your beloved institute definitely benefits you a lot. It's my pleasure to deliver the session at the institute level beta. I thanks the institute authority for giving me an opportunity, wonderful opportunity I would say, to teach the lovely students like you. Thank you, my dear student, and my best wishes for your upcoming examination. Only one thing I will advise you: keep the work hard, because luck will not always play a big role. 90% your hard work will be converted into your positive result. So always believe in hard work, and definitely the luck will follow that trail. Okay, beta. Thanks a lot for watching the session, beta. God bless you all. Thank you. Rehan ji, please end the session. Okay, sir. Thank you. Okay, sir.